Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today we are doing our next topic, that is average velocity, average speed, how we can find it. In last class we discussed there three equation of motion, that is first equation, second equation, third equation of motion. So today we will discuss their average velocity, average speed, how we can find. Average velocity, first average speed, it is a total distance covered by body per unit, total time is known as total average speed. Average speed. So average speed we can write mathematically. Average speed we can write total distance by the total time. Okay, total distance, total time means from here to there. Let here S1 distance in T1 time, S2 distance in T2 time, S3 distance S3 time, S4 distance T4 time. Let here we assume this one travel by any body. So average distance, by using this one we can write there S1 plus S2 plus S3 plus S4 divided by total time, we can write there T1 plus T2 plus T3 plus T4. This one is an average speed, total distance by the total time. Same for the average velocity. Average velocity we can write there. Average velocity, we can write there total displacement per unit total time is known as average velocity. Average velocity. So average velocity we can write there, average velocity will be equal to total displacement by total time. So for this one mathematically you can write there average velocity displacement S1, S2, S3 so on divided by total time T1 time, T2 time, T3 time taken during this one path, that is known as the average velocity. Okay, on behalf of this one, let we are doing a one question how we can solve. Let there an object moving with 4 meter per second for half distance and for next half distance
traveled with 8 meter per second. Okay, then find average velocity. Then find average speed of that object. So how we can find? Here two different way to find the average velocity. One is a for the same distance, second is for same time. Okay, here given that is the same distance. Question में जो कह रहा है that we are indicating on a that given diagram. Here let an object starting from here initially is given that 4 meter per second के साथ वो move कर रहा है कितने distance के लिए? हाफ डिस्टेंस के लिए. ओके, फॉर द आउट ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस हेयर इनिशियल पोजीशन, हेयर आवर डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन क्या है? ये है. तो इनिशियली यहाँ से चला, फाइनली हाफ डिस्टेंस मीन्स दिस वन योर एस इज देयर, देन आउट ऑफ दिस एस फर्स्ट हाफ, दैट मीन्स वी कैन राइट देयर S1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद योर 4 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं. उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस traveled with a 8 meter per second. Next half distance traveled with a 8 meter per second. Next half distance कैसे travel कर रहा है? 8 meter per second के साथ. Then find here to average speed. How we can find their average speed? अभी मैंने बताया average speed find करने के लिए क्या यूज करते हैं? Average speed equal to our average speed equal to total distance by total time that is known as the average speed. So here total distance we can write there, this one equal to this one, S1 plus S2 we can write there or not? S1 plus S2 divide by total time, T1 time plus T2 time. Sorry, let here for this one path here time is T1 and for this one time path T2 time is taken. तो यहाँ पे क्या नीड है? टोटल टाइम की T1 and T2. तो T1 इसके लिए हम T1 कैसे फाइंड करेंगे? T1 we can write there as we know that velocity equal to your distance upon time. Yes. T1 time we can write their distance upon our velocity. So same for T2 we can write there S2 by V2. Okay, V1 V2. So T1 we can write there S1 by V1 given your 4 meter per second, then T2 we can write there S2 divide by your 8 meter per second. Clear? This one given. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं. मींस फर्स्ट एंड सेकंड बोथ डिस्टेंस आर इक्वल विद ईच अदर. सो हियर वी कैन राइट देयर एज गिवन इन क्वेश्चन देन S1 इक्वल टू आवर S2. S1 और S2 क्या दोनों इक्वल है? तो इक्वल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वी कैन राइट देयर S1 प्लस S2. हमारे पास क्या आ गया था? T1 प्लस T2. तो T1 हमने सोल्व किया था, T1 क्या आ गया था? T1 इक्वल टू S1 by 4 and T2 S2 by 8. S1 by 4 and T2 इक्वल टू S2 by 8. ये हमारे पास T1 T2 आ गए थे. दिस वन सेकंड एंड दिस ऑल्सो सेकंड. सो T1 T2 S1 S2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल है. तो S1 इक्वल टू S2 वी कैन राइट देयर. सो T1 क्या हो जाएगा? लेट हियर वी आर राइटिंग देयर S1 S2. सो S1 by 4 and T2 S1 by 8. S2 को S1 लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल डिस्टेंस. दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस वन. सो हियर वी कैन राइट देयर average speed equal to S1 and S2 both we can write equal. That's why 2S1 we can write there. S1, this one also S1, then here will be 2S1. T1 equal to your S1 by 4 plus T2 equal to S1 by 8.
ओके, अब इसको सोल्व कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 8 then 2s1 plus your s1. So here we can write there 2s1 divide by your 3s1 into your 8. 8 को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, s1 से s1 cancel out. So here we can write there 16 by 3 and this one our average speed, that's why 16 by 3 meter per second. This one is your way of the find out the average speed if here one distances are given. Okay, so derivation of this one we can write there, if two half distance, if distance is divided into two half, if total distance, what total distance divide into two equal half. Okay, so here let we are taking there कि total distance हमारे पास ये है s, तो total distance को हमने क्या है, दो में डिवाइड कर दिया, s1 plus s2. ओके, दोनों क्या है, इक्वल है. if their velocity is v1 and here velocity is v2, then average velocity or speed we can write there total distance by total time. Okay, total distance by total time we can write there by total time. Clear? So total distance we can write s1 plus s2. Total time we can write there t1 plus t2. So here s1 plus s2 and t1 and t2. t1 from here we can write there t1 equal to here velocity distance equal to distance upon time. Okay, and time will be equal to distance upon velocity speed. So here t2 we can write there s2 by v2. Clear? if S1 दोनों क्या है, स्टार्टिंग में हम लेके चले बोथ आर इक्वल हाफ, दोनों सेम में डिवाइड हो रहे हैं. सो T1 वी कैन राइट देयर S by V1 S1. So T2 we can write there S1 by V2. So we are putting here T1 T2, same we are applying here as S1 equal to S2. So here we can write there S1 plus S1 2. So T1 we can write there S1 by V1 plus S1 by V2. Okay, now take LCM of this one. After taking LCM, then here we can write there 2S1, then take LCM V1, V2, and here V1, S1, V1 plus S1. S1 we can take common here. Okay, here will become V1. So after that here, after taking common, 2S1 divide by S1, here V2 plus V1 divide by V1 V2. S1 to S1 cancel out. ओके, सो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, इसको सॉल्व करके हम यूज कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वी कैन राइट देयर हियर लेफ्ट 2 बाई क्या बचा इधर 2 बाई V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2. ओके, V2 प्लस V1 डिवाइड बाई V1 V2. तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 V2. दिस वन आवर एवरेज स्पीड.
तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर दो वेलोसिटी गिवन, उनका एवरेज स्पीड निकालना, तो डायरेक्ट वी कैन यूज। बट इसकी कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस हम डिवाइड कर रहे हैं, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर टोटल क्या है हमारे पास 6 मीटर डिस्टेंस है, तो फर्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल विद सम स्पीड, नेक्स्ट 2 मीटर ट्रेवल विद सम स्पीड, देन नेक्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल विद सम स्पीड, देन एवरेज वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की यूज करते हुए डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। सो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई करते हैं, देन इट विल बी रिमेन सेम ओनली। अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था। इसके अंदर क्या था, फर्स्ट हाफ, दो इक्वल हाफ में डिस्टेंस, एक 4 मीटर था, एक 1 मीटर था। तो इसी के अंदर अगर हम इक्वल अमाउंट में हम निकाल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि दिस वन योर फर्स्ट हाफ, सेम डिस्टेंस है, स्पीड ये गिवन है, तो डायरेक्ट यू कैन यूज दिस वन फॉर्मूला जो अभी ड्राइव किया हमने। क्या फॉर्मूला ड्राइव किया है एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम वेयर दिस वन केम। तो इस कंप्लीट को बड़ा सोल्व करने की बजाय अगर एमसीक्यू आपके डायरेक्ट गिवन, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड वेलोसिटी के लिए, अगर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट ऑफ द डिस्टेंस है। सो हियर डायरेक्ट वी कैन यूज इट। v1 v2 गिवन इन आवर क्वेश्चन 2, v1 इज गिवन 4 मीटर एंड v2 is given our what 8 meter per second, then v1 your 4 meter per second, then again your 8 meter per second, then solve it, then after the solution, then 2 into 4 8, this coming 4 2 into 4 8, then 8 into 8 64 divided by your 12. Okay, so here we can write it 4 1 ja 4 2 6, here 16 by 3 meter per second. See here, this one by direct using formula this answer only came, and you complete solve करने के बाद भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 16 by 3 आ रहा था। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो एज ए थ्योरेटिकल। यू डोंट नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज, तो डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यूज करते हुए हमें कंप्लीट रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस वन फॉर्मूला। इसको यूज करते हुए यहाँ पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व कर दो, तो क्या आ रहा है हमारे पास 16 by 3 आ रहा है। और डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अभी ड्राइव किया था हमने S1 S2 लेके, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 16 by 3। बट ये किस केस के लिए, जब हमारा डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर इनइक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है अनइक्वल रेशियो आ रहा है, देन वी कांट यूज, देन वी हैव टू यूज दिस मेथड ओनली। तब हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा, उस टाइम पे हम ये नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वन, this one question we have done, average speed equal to this one. Okay, so next we have to find out if your time is given. Okay, your time is dividing, then how we can find their average speed and average velocity. So here we will do, let question is there, initially let here first we are doing the derivation of this one. Here time from here to there, initially कोई बॉडी है वो मूव कर रही है t1 टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसकी स्पीड क्या है, v1, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए क्या है, उसकी स्पीड v2 है। ओके, देन इफ देयर वी कैन राइट देयर 4 dividing total time into 2 equal distribution of time, distribution of time, कि जो टोटल टाइम है कि किसी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 मिनट लगी, तो 15 का हाफ जो है वो इक्वल टाइम में डिवाइड करे कि फर्स्ट हाफ जो टाइम लगा v1 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया, नेक्स्ट हाफ उसने v2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। सो इस केस में भी कैसे एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, फॉर दिस केस एवरेज स्पीड हाउ वी कैन फाइंड, सेम फर्स्ट वी विल अप्लाई देयर फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड।
total distance by total time we will write there. Total distance we can write there S1 plus S2 and time we can write there T1 plus T2. इस केस के अंदर क्या है आपका T1 इक्वल टू T2 है, दोनों इक्वल है। लास्ट केस में क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, S1 इक्वल टू S2, इसमें टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो क्या चेंज आएगा, एवरेज स्पीड फाइंड करते टाइम। सो वी आर अप्लाइंग हियर, सो नीड ऑफ S1 हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर S1 वी कैन राइट देयर V1 T1 and S2 we can write there V2 T2. So time is equal to T1 T2 both are we are writing there T only, T के अगर इक्वल पुट करें so S1 we can write there V1 T and S2 we can write there V2 T. Now putting value of S1 S2 from here to here, so after putting then we can write there V1 T plus V2 T divide by our T1 plus T2 both are equal, दोनों क्या है इक्वल है, T1 plus T2 sorry plus not equal, both are equal ना, T1 equal to T1 T के इक्वल है, तो इक्वल है, so we can write there T1 plus T, we can write both time are equal ना, कि टोटल टाइम को आप हाफ हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इक्वल कर रहे हैं तो T1 T2 क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, तो इक्वल हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, T के इक्वल, तो T के इक्वल एज्यूम करें, सो हियर वी कैन राइट देयर T1 we can write common, so here left V1 V2 divide by our T plus T, then 2T we can write there 1T cancel out, तो एवरेज जो हमारे पास स्पीड आएगी वो क्या आएगी, V1 plus V2 divide by 2. I hope you understood. If more than 2 distribution will be there, then we can write that V1 plus V2 plus V3 divided by 3 for average speed, average velocity. V1 plus V2 plus V3 up to nth will be there, divided by number of the turns will be there. So this one will be to find out average speed. तो हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक में तो हम डिस्टेंस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक में क्या है टाइम को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस वन मेथड, दिस वन डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम. So tomorrow we will discuss some question related with it. I hope you understood. Thank you for watching today our video.